reaction and we have seen alkylation. ठीक है. Now, the third reaction that we have to see is very important. Yes. Yes, There was Shaveer, a doubt regarding the last reaction. alkylation. Yes. हाँ जी बताएं. So in that you wrote that 1 degree and 2 degree give 3 degree, it gives 4 degree, right? No, I mean, see, this 4 degree is basically a salt, right? Okay, okay. Okay, so that is why we generally don't prepare this, but I'm saying that this reaction can go further on. But 1 degree and 2 degree, I mean, now if you have been given in the question, तो फिर आप यहाँ तक बनाइए. अगर आप यहाँ तक भी अगर subjective answer है और यहाँ तक अगर आप बना रहे, then that is not going to be any problem, है ना? So you're obviously making the 3 degree one also. ठीक है? चलिए, moving on. Write the third reaction. That is basic character. Now, basic character, that is quite important. ठीक है? तो बेसिक कैरेक्टर में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अमीन्स में बेसिक कैरेक्टर होता किस वजह से, एंड देन वी विल फर्दर लुक ऑन लाइक हाउ द बेसिक कैरेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, है ना. स्ट्रक्चर का क्या उसमें रोल होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मेनली उसको देखेंगे. सो इफ आई हैव RNH2, दिस इज बेसिकली अ प्राइमरी अमीन, एंड आई ऐड वाटर टू इट. तो वाटर में ये क्या करना चाहिए, इसको OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए. So what will happen? The nitrogen atom, which is having a lone pair electron, it will attack on one of the hydrogen atoms, and it will give you RNH3 with a positive charge here, plus OH negative. So as you can see, if I add amine in water, the concentration of OH is going to increase. Now, when we talk about the strength of a base, we talk about Kb. है ना? What do we talk about? We talk about Kb. Now, what is Kb? Kb is actually, it is first of all, देखिए equilibrium constant क्या होता है? Equilibrium constant is product upon reactant. Concentration of product upon the concentration of reactant. What is the product here? The products are RNH3 positive and OH negative divided by, what is the reactant? The reactant is RNH2 multiplied by water. जब H2O को आप K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, so K into the concentration of H2O, I mean, you don't to multiply it, but water की concentration generally ली नहीं जाती है, so this will give you RNH3 positive and OH negative divided by RNH2. Now this basically is the Kb. अगर आपसे पूछे what is Kb for amine, amine के Kb का फॉर्मूला होता है RNH3 positive, concentration RNH3 positive, concentration of OH negative divided by the concentration of RNH2. ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से. Sir, हाँ जी बताएं. so why are we multiplying K into H2? Why I'm multiplying K into H2O? See, basically H2O को multiply इस वजह से किया जाता है because concentration of H2O does not change. प्योर लिक्विड, अगर आपको ध्यान हो, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है. ठीक है? तो उसको हम लोग कहते हैं कि 1 ले लिया जाता है, बट 1 नहीं लिया जाता, रादर उसको यहाँ पे इधर भेज दिया जाता है, K की तरफ. ठीक है? इधर भेज दिया जाता है. So this, the equilibrium constant multiplied by water, it is actually, it is not equal to Kb, but rather Kb को इस तरह से designate किया जाता है ना. This Kb का फॉर्मूला ये होगा. If you want the equilibrium constant, then equilibrium constant का फॉर्मूला आपके पास ये होगा. This will be the equilibrium constant for the reaction. ठीक है? Basically Kb is a pure liquid. That is why you can send it. It is a constant ना. Pure liquid का जो concentration होगा, it is not going to change. That means it is a constant. And constant multiplied by constant will give you a new constant. That's it. जो कांस्टेंट चीजें हैं उसको एक तरफ लेके गए हैं बस. मेक सेंस शावेज? ठीक है? ये बेसिकली 11th में पढ़ाना चाहिए था आप लोगों को, है ना. यू शुड नो दिस फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड दैट H2 इज एक्चुअली मल्टीप्लाइड हियर.
but again constant into constant will give you a new constant. Now if you see here, if the concentration of product is increased, then the numerator का value क्या हो जाएगा? The value of numerator will increase, right? अगर OH negative is going to increase, then the value of numerator is going to increase. That means Kb will also be high. और जब Kb high होगा, that means we can say that strong base. Kb should be high for a strong base. Now, if I go inverse, then I can say that अगर Kb high है, देखिएगा guys यहाँ पे, we know that Pkb, it is equal to minus log of Kb. So if Kb is higher for strong base, क्या होता है? Kb high होता है, Kb is higher, the Pkb will be lower because negative sign आ रहा है यहाँ पे. Pkb will be lower Yes, and Pkb जब कम होता है, that is a strong base. sir. Asha, is you saying something? Sir, P is Sorry, pH. pH, what's wrong? pH, pH. No, P is not pH. pH रहता तो pH लिखते ना. पीके याद नहीं है आप लोगों को? कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो यूज होता है. पी तो बहुत जगह है. पी मतलब पावर ऑफ के भी होता है. पी का मतलब माइनस लॉग. ओके. जैसे पीएच क्या होता है? पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन, है ना भाई? पी के क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ के ए. पी के बी क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ के बी. गॉट इट? Yes, sir. ठीक है. ओके, चलिए प्लीज राइट दिस डाउन. एंड इसमें साथ में बस एक छोटा सा मान लिख दीजिएगा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ, yeah, rather I should write like the strong base have lower value of pkb. Strong base have lower value of pkb. Write this down. Raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done, guys. ये पोर्शन आपके पास इंपॉर्टेंट है ना? दिस वन, पीकेबी की क्या मतलब होता है? Shahbaz is done. Waiting for Rabah and Shahil. ठीक है. Now, next इसमें आप लिखिए amines have lone pair on nitrogen atom, due to which they behave as Lewis base. They behave as Lewis base. अच्छा, तो इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन में हम ज्यादा कर दें, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में ज्यादा कर दें, तब क्या होगा? देन वी कैन से दैट वी इट विल इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन.
तो उस वजह से आई एम गोइंग टू कंपेयर अ फ्यू थिंग्स, ठीक है, कुछ चीजें कंपेयर करने वाले। फॉर एग्जाम्पल ये था अमोनिया, प्लीज डोंट राइट नाउ, that is having NH3. There are 3 hydrogen atoms attached to nitrogen atom. This is ammonia. This is not amine. This is what? This is ammonia. Alkyl group अभी नहीं आया है, ठीक है? Let me just copy this. अब उसके बाद क्या करते हैं? Let me keep these 2 hydrogen as it is, and I add alkyl group यहाँ पे। अच्छा, एक हमने क्या डाल दिया? Alkyl group डाल दिया। तो ये क्या हो गया? This is 1 degree now. This is 1 degree amine. If I keep 1 hydrogen as it is and I add 2 alkyl group, this will become 2 degree. And if I add all the 3 bonds are attached with, all the 3 bonds are with alkyl group, तब ये क्या हो जाएगा? This will be 3 degree. Now, then we will compare what is the basic nature. ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है, तो उसको भी थोड़ा सा, yeah. So each nitrogen atom, it is having lone pair electron, because of which what it is acting as a, due to this lone pair electron, it is acting as a Lewis base. अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, see, if you add an alkyl group, it is going to give electron density towards the nitrogen atom. बात सही है? Alkyl groups are what? They are plus I effect, है ना? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा alkyl group से. It will pull more electron density from here because there are 2 alkyl groups. So it will pull even more electron density because there are 3 alkyl groups, right? So if I only look at electronics, electronic का मतलब कि where is electron? Sir. Yes, Travis? Alkyl groups are plus A groups, right? Alkyl groups are? Plus A groups, right? हाँ, yes, correct. You're asking something? इसके बाद भी कुछ है? प्लस आई का मतलब वही होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट? Okay, sir. है ना? प्लस आई का मतलब क्या हुआ? दे गिव इलेक्ट्रॉन, दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई प्लस आई. So I are giving electrons. So if I only look at the electronics, मतलब electrons कहाँ है? अगर electronics की बात करें, electronics में plus I effect we are going to see, and according to the plus I effect, the largest amount of electron will be on the 3 degree amine, followed by 2 degree amine, followed by 1 degree amine, and then the least will be on ammonia. I am looking at only what? I am looking at only electronics, and I can see that agar electron, the presence of electron is highest in 3 degree, then 2 degree, then 1 degree, then obviously the basicity or the strength of the base is also going to depend, also going to have the same particular order. तो ये basicity का यही order आपको मिलेगा. If we are only going to look at the, if you are only going to look at what? Only going to look at the electronics. अब दूसरी चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. Let me just take this above. It does not belong here. तो हम यहाँ रखते हैं, ठीक है? 1 degree, 2 degree and 3 degree. अब ध्यान दीजिए जरा. Let's suppose अब this particular electron that is present here, it is going to attack on a hydrogen atom. This nitrogen has to move. This nitrogen also has to move, and this nitrogen also has to move, and this nitrogen also has to move. Now, depending on the size of the molecule, tell me कौन सबसे आसानी से move करेगा? What do you guys think? NH3, right? Because of the small size. Now, this is known as the steric effect. Because of the bulky group, what is happening? This nitrogen atom cannot move. See, electron अपने आप नहीं जाएगा ना. Electron will go with the nitrogen atom. Nitrogen atom will move towards the hydrogen. Why? Because it has a lone pair. तो lone pair अपने आप नहीं चला जाएगा. सिर्फ electron नहीं जाएगा. This whole molecule is going to move. So obviously, if I look at the sterics, ये electronics हो गया, and this is sterics. Sterics का मतलब what groups are attached. Steric effect की वजह से, if I look at steric effect, then NH3 should have, NH3 should easily go and attack acid, then followed by 1 degree, and then followed by 2 degree, and then followed by 3 degree. And this will be the order of basicity. Let me complete. Yes, Shavesh, tell me. हाँ Shavesh. Sir, it will attack H2 molecule, right? H2O नहीं, मतलब हाइड्रोजन एसिड, मतलब अगर एसिड रहा तो एसिड H प्लस प्रोटॉन, ठीक है? कुछ H प्लस कहीं से ही मिल जाए, ठीक है? अब कैन यू सी दैट वी आर गेटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग
रिजल्ट्स, Yes. है ना? अगर if you are going to look at electronics, then it is 3 degree, 2 degree, 1 degree, then ammonia. If you are going to look at sterics, that is and ammonia, then 1 degree, then 2 degree, and then 3 degree. So that is why what we need to do now, we need to now look at the experimental results. Because theoretically, if you are going to decide which is going to be basic, so we are having conflicting factors. Okay, so what you will write here, see, since basicity is determined by multiple factors, multiple factors with conflicting results, we will conclude according to the experimental values. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में आपके पास दो चीजें हैं. पहले आपको याद रखना पड़ेगा, इफ यू हैव इथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट, आर की जगह क्या है, इथाइल है. इफ यू हैव इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, if you have ethyl substituent, what is ethyl? C2H5, no? C2H5. In ethyl substituent, the 2 degree is what? The most basic, followed the next basic is 3 degree, उससे कम होता है 1 degree, and least is ammonia. Meaning, if I am going to make the molecules itself, अगर हम molecule ही बनाए, then here it is going to be C2H5 whole twice NH will be the most acidic. Then you will have C2H5 whole thrice nitrogen, no hydrogen, followed by only one C2H5 and H2. There are two hydrogens, and then followed by ammonia. So this is the order if you have ethyl substituent. One substituent other that you have to remember is the methyl substituent. So देखिए ethyl पहले हमने इस वजह से कराया कि यहाँ पे आप 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 1 NH3. ठीक है, then you have methyl substituent, my bad, methyl substituent. Methyl substituent is CH3. Now, in methyl substituent, what happens? This also starts with 2 degree, then 1 degree, and then 3 degree, and then NH3. If I'm going to make the compounds, then they are going to be, you will have CH3 whole twice, NH, then you will have CH3 NH2, and then you'll have CH3 whole thrice, nitrogen, then followed by NH3. Please, you can write it down. Raise your hand once you're done. Sir, Yes, tell me. sir, I Yes, joined a bit Madhya. late. Can you show me from the starting, from where we started? Just this. Yeah, take a screenshot. Yes, sir. Yes, sir, took. Just give me
मदीहा, अब खैर अब तो आखिरी टाइम हो गया बिल्कुल, लेकिन टाइम से ज्वाइन कीजिए। आप ना काफी लेट थे आज। व्हाट हैपेंड मदीहा? So sorry. So actually yesterday I pulled an all-nighter and I had an exam today. So I was taking a nap, so that's why I got late. अच्छा, so what subject? So physics. अच्छा, how was it? It was good, sir. It was good. Okay. Yes. क्या आया ज्यादा, डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल? So it was yeah, it was mostly derivations. Mostly derivations. Just give me a second. This right. Guys, raise your hand once you're done. Is done. Waiting for Madiha and Shahid. अच्छा, ये आपको याद करना है, ठीक है? 231 213, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है? चलिए, अच्छा, ऑल ऑफ यू डन, फाइन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट अमीन्स, राइट? नाउ व्हाट अबाउट दिस अमीन्स, मतलब एलिफैटिक अमीन्स हो गया ना। नाउ इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर अराइल अमीन, दैट मींस एनिलीन और अमीन, ठीक है? इन सबको अगर हम कंपेयर करें, तब वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो प्लीज राइट, हेडिंग आप ऐसे लिखिएगा, एनिलीन वर्सेस अमीन वर्सेस अमोनिया, दैट इज NH3, ठीक है? वर्सेस अमोनिया, NH3। सो इफ यू लुक एट एनिलीन ना, यहाँ पे देखिए, अगर एनिलीन को अगर आप देखेंगे, इट इज लाइक दिस एंड देन NH2 with lone pair here. अच्छा, if I'm going to make the complete double bond वगैरह structure, तो you can see that this particular lone pair electron, it is in resonance. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. This nitrogen's lone pair is in resonance. ना, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो हाइड्रोजन पे कैसे अटैक करेगा? H प्लस पे कैसे अटैक करेगा? मेक सेंस? सो सिंस दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड, the lone pair of nitrogen in aryl amine or aniline, it is not localized, therefore what we can say, therefore they are less basic than amines. So you'll write a point here, aryl amines are less basic than amines, are less basic than amines because the lone pair, the lone pair on nitrogen atom, lone pair on nitrogen atom is
delocalized due to resonance, making it less available. Making it less available. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes. नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, aryl amine are even less basic than ammonia due to same reason. ठीक है, तो अगर हम इन जनरल बात करें, सो RNH2 विल बी मोस्ट बेसिक अमीन, चाहिए आर आपके पास प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, जो भी हो, अमीन ऐसे लिख देते हैं, अमीन इन जनरल अमीन, है ना. 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की कोई कैद नहीं है यहाँ पे. इन जनरल एनी अमीन इफ यू सी इज गोइंग टू बी having higher basic strength followed by ammonia, that is NH3, followed by aniline. एनिलीन का इन तीनों में सबसे कम होगा. अच्छा, अब ऐसा नहीं बोल रहे कि एसिडिक ही हो जाएगा, बेसिक तो रहेगा एनिल बट इट विल बी लेस. हाउ कैन वी इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलीन? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना. सो प्लीज राइट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप such as OCH3, CH3, etc. OCH3, CH3, etc. on ortho and para position increases the basic strength of aniline, है ना. उसके बाद and electron withdrawing groups such as NO2, CHO, aldehyde, कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया तो वो एसिड ही हो जाएगा. सल्फोनिक SO3H अगर लग गया तो एसिड ही हो जाएगा, एटसेट्रा. डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन. Write it down, raise your hand once you're done. वेटिंग फॉर मदीहा एंड तारीफ. अरे ये तारीफ भी बहुत लेट आए हैं आप तो. Yes, I had some personal issues. I hope everything is fine.
कैसे, लेकिन आप लोग इतने छोटे छोटे बच्चे हैं and you have got all the corporate language with yours. Personal issues और क्या क्या होता है? There is some technical issues in my internet. I am really not. I'm not. I'm not being sarcastic. ठीक है? This is not sarcasm, but I'm just. It's just an observation. कि 10th 12th के बच्चे भी they are not having this corporate lingo. Write this question. Arrange the following in decreasing order of the basic strength. ठीक है? See here guys. The first one C6H5NH2. It is what? It is aniline. Benzene ring with NH2. This is 1 degree. It will the weakest. Sorry. It will be the weakest. It will be the weakest. है ना? उसके बाद क्या है आपके पास? This is 2 degree and this is ammonia. Right. So अगर हम ABCD कर दें, this is A, this is B, this is C and this is D. So you can see that decreasing order में बोला है ना. तो सबसे ज्यादा क्या होगा? 2 डिग्री वाला हमेशा सबसे ज्यादा है ना. Whether it was ethyl case या methyl case, यहाँ पे तो ethyl है. 2 डिग्री is always greater, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा. Followed by 1 degree, that is B. Followed by ammonia, that is B. And then followed by the aniline, that is A. Got it guys? This one please tell me. Yes. चलिए अब ये कीजिए जरा. ठीक है, हमने आपको बता दिया कैसे करना है. you'll first of all identify कि aniline कौन सा है, 1 डिग्री 2 डिग्री वो देखना है. ठीक है, उस हिसाब से कीजिएगा. अब बस यहाँ पे चेंज किया, यू हैव टू अरेंज इट इन pKb वैल्यूज. ठीक है, यू शुड नो दैट pKb वैल्यू इट इज, अगर हम बोले बेसिक स्ट्रेंथ के, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी. ठीक है, तो उसका ध्यान रखते हुए प्लीज डू दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Do this and then send your answer on my WhatsApp, है ना. I also want to see how you have what is the process that you have used. ठीक है, आप लोग जरा कीजिए. आई एम कमिंग इन.
Guys, send your answers once you are done, guys. If you are getting stuck ना, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिए जरा, है ना। सबसे पहले देखिए, आप डायरेक्टली आंसर कभी नहीं ला सकते। यू विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और इट इज एनिलीन। ठीक है, पहले तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। दो अगर एनिलीन है तो फिर इसमें देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वेदर इट हैज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और देयर इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नहीं guys, ज्यादा नहीं, 2 more minutes, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 5 मिनट ले लिया आप लोगों ने, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया। 2 more minutes एंड दैट्स इट। यार 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कुछ नहीं लिखा है आपने शायद। व्हाट हैपेंड? शायद इसने भी नहीं लिखा, तो ऐसे ही कर दिए सारे लोग। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? डायरेक्टली यू कैन नॉट डू वॉट एवर यू आर थिंकिंग ना, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री उसको आप लिखिए। चलिए गाइस, 2 minutes आर ओवर। और कुछ नया आंसर? हाँ, शाहिद ने भी भेजा है, सबने भेजा। चलो ठीक है, ठीक है, पहले शावेज का हम देख रहे हैं। 1 डिग्री है, 600, 2 डिग्री है 600 पी के भी। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। लेट मी सी, तारीफ, हाँ शायद आपका ठीक है, तारीफ पी के बी ना। ओके ओके, करेक्ट, फाइन। शायद थोड़ा आपने थोड़ा गलती कर दिया शायद, पहले आपने सही आंसर लिखा था, काट के आपने गलत कर दिया। सी हियर, रबा एंड मदिया, आप लोग का आंसर एक भी नहीं आया। दिस इज 1 डिग्री, दिस C6H5NH, इट इज व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ एनिलीन। और एक CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, राइट, दिस इज 1 CH3 ग्रुप, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्योर एनिलीन। Now because of this CH3 group, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, देयर इज सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगा, सो इट कैन
मतलब it can donate electron density bit more effectively than pure aniline. अगर if I put it as A, this as B, this as C and this as D, तो हम बेसिक स्ट्रेंथ सबसे पहले देखेंगे. बेसिक स्ट्रेंथ, इफ आई लुक एट बेसिक्स, देखिए पीकेबी वगैरह है ना, तो पहले इसी तरह देखा जाता है. ठीक है, पहले आप बेसिक स्ट्रेंथ लिखिएगा. तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसका होगा? डी का, दैट इज प्योर एनिलीन. उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड, दैट मींस देयर इज वन CH3 वाला एनिलीन. उसके बाद होगा बी का. आफ्टर दैट यू विल हैव ए. एंड सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा सी का. एंड वी नो दैट बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होता है, इफ बेसिक स्ट्रेंथ इज हाई, द पीकेबी इज लो. तो पीकेबी के लिए क्या करेंगे आप? पीकेबी की वैल्यूज के लिए यू विल हैव द सेम थिंग, डी, बी, ए, सी. जस्ट चेंज द साइन. बस आपको साइन चेंज करना है. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस, समझ में कैसे करना है? हाँ या ना भाई लोग? अरे बोलो, जल्दी बोलो. यस और नो गाइस? गॉट इट? रबा, मदीहा, Yes, sir. प्लीज कॉपी दिस डाउन. आई होप ये आपने लिख लिया होगा. वही ना? नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्शन? बेसिक स्ट्रेंथ में यहीं तक है आपके पास. सवाल तो बहुत अनंत हो सकते हैं ना. सवाल हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे. फोर्थ रिएक्शन, प्लीज राइट असाइलेशन. Fourth reaction is acylation. Now what happens in acylation? You start with a primary amine. ठीक है, प्राइमरी amines आप स्टार्ट कीजिए. दैट इज सपोज यू हैव RNH2, right? And then you have a acyl chloride. Can have acid anhydride also, yeah, but आपके पास कैसा होना चाहिए? R dash C double bond O. यहाँ पे आपके पास Cl लगा हुआ होगा. So as you can see, this carbon atom will be having delta positive charge because it is attached with oxygen as well as chlorine. अब यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या काम बनता है? नाइट्रोजन इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम. As soon as it attacks on the carbon atom, what will happen? This pi bond will first of all break. Pi bond जब break होगा, then you will see that there is R carbon, ऊपर में O negative, नीचे में आपके पास है नाइट्रोजन. अटैक इज हैपनिंग वाया नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन के पास है यहाँ पे दो हाइड्रोजन. एंड देयर इज वन R ग्रुप. इसको R डैश कर देते हैं ना, ये R डैश हो जाएगा. यहाँ पे इसको R आने देते हैं ना. दैट मींस दीज अल्काइल ग्रुप मे और मे नॉट बी सेम, है ना? सेम हो सकते हैं, नहीं भी सेम हो सकते हैं. एंड दिस Cl इज एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दिस O नेगेटिव इज गोइंग टू फॉर्म रीफॉर्म द पाई बॉन्ड. और यहाँ पे आपके पास, अच्छा एक और चीज देखिएगा, दिस नाइट्रोजन एटम इज नाउ हैविंग 4 बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक. अब उसके बाद क्या होगा? दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक फ्रॉम हियर. और ये क्लोरीन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन पे ऐसे अटैक करेगा. Fine. There are many things happening, but you need to remember the product. What is made? R dash bonded to carbon. This oxygen reforms a double bond. Now this carbon is further bonded with nitrogen. अच्छा, जैसे ये क्लोरीन हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, this hydrogen is going to give the electron to nitrogen and neutralize it. Now this carbon is next bonded to nitrogen. This nitrogen has just one hydrogen and then it is further bonded with the alkyl group initially. तो आप देखिए, what we have got? We have got a amide. We started with amine. We had acid chloride. और आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग अमाइड. ठीक है, ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए. हाउ विल यू राइट इट? प्लीज राइट विथ मी. एरोमेटिक एंड एलिफैटिक अमीन्स. अभी कौन आया भाई इतना लेट? एंड एलिफैटिक अमीन्स
एलिफैटिक में सिर्फ ध्यान रखिएगा, यू कैन हैव प्राइमरी Yes, yes. और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी सिर्फ हो सकता है, बिकॉज एटलीस्ट यू शुड हैव वन हाइड्रोजन, ताकि ये क्लोरीन यहां से भाग के ले जाए, है ना। क्लोरीन कैन अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। ठीक है। एरोमेटिक एंड एलिफैटिक अमीन्स 1 डिग्री और 2 डिग्री reacts with acid chloride, anhydride, acid anhydrides, and esters, तीन से रिएक्ट होता है, and esters to form amides. Yes, sir. Yes, is tell me. So in the reaction, how is nitrogen having positive charge? It is, देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव ही चार्ज आएगा, और जब भी नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड होते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज आता है उस पर। ऑक्सीजन के पास जब 3 बॉन्ड होते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है। Okay, sir. यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज है बेसिकली, मतलब बेसिक है ये। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको। इट इज न्यूट्रल एंड इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन टू कार्बन एटम टू मेक अ बॉन्ड। ठीक है। Write this down, raise your hand once you're done. ठीक है। सिंपल अगर आप समरी भी लिखना चाहें तो समरी इस तरह से लिख सकते हैं। होप यू हैव डन विद दिस, दैट यू हैव RNH2, all of these they are going to give you the same thing. If you use R dash COCl, or you are going to use R नहीं, ऐसे लिख लीजिए CH3 या R लिखिएगा। So let me give you one specific example, ठीक है ना। एक हम आप लोगों को एग्जाम्पल ही दे देते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। Let us suppose you have C2H5NH2. Let me make it like this. 2 carbon atoms and NH2. यहाँ पे आपके पास है CH3COCl. Here you have double bond O and C double bond O. This is what? This is acid anhydride. और एस्टर केस में आप लिख लीजिए C double bond O, OCH3. In all of these cases, you are going to get one carbon atom with C double bond O, CH3, C double bond O, and then you are going to have NH and then 2 carbon atoms like this. तो यहां से आपके पास ये फ्रैगमेंट CH3 C double bond O, this fragment from here, then this fragment from here, and then this fragment. This fragment from here, and similarly this fragment from here. ठीक है। CH3 C double bond O, उसके बाद NH2 CH3. Write this down.
Yep, all of them, they will have same product. ठीक है, अब इसी में देखिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्शन होता है ना, see here, if you have CH3 COOH plus, let us suppose you have RNH2 sorry, CH3NH2 कर देते हैं. Now obviously this is acid, this is base, so it is going to form salt, and the salt will be something like this: CH3 COO negative and NH3 positive, which is bonded to R. R नहीं, यहाँ पे CH3, my bad, CH3 है ना, तो CH3. ठीक है, it is going to form a salt like this. Like next, reaction with nitrous acid. This is what, fifth reaction. Reaction with nitrous acid, that is HONO. ONO. ठीक है, now please write here. Nitrous acid, अच्छा HONO की जगह ना आपको ऐसे भी दिया जा सकता है HNO2. If you look at the formula, it is HNO2, but हम इसको याद रखते हैं ONO, है ना. ONO is easy to remember, so nitrous acid is ONO. Now nitrous acid is prepared in C2. In C2 का मतलब जब भी आपको रिएक्शन करने की जरूरत होगी, आपको डब्बे में नहीं मिलेगा ONO. You'll have to prepare it in the reaction and then simultaneously use it. Prepared in C2 by the reaction of NaNO2, sodium nitrite, and HCl plus HCl at low temperature. ठीक. Now there are different types of reaction. अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें, if I talk about primary amine, how do they react with ONO? Then you have seen this in the method of preparation of alcohol. You will have RNH2 plus HONO, and obviously this is made by the NaNO2 or HCl. तो NaNO2 और HCl, Cl वगैरह सब कुछ है यहाँ पे. It is going to give you a very unstable intermediate, that is R, that is having N2 positive and Cl negative. अगर N2 positive Cl negative से आपको कुछ benzene diazonium salt, diazonium salt याद आना चाहिए. And with a little bit of heat and H2, it gives alcohol, ROH and HCl. ठीक है, and this is not stable, this is unstable. But if I do the same reaction with aromatic amine, C2 का मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा reagent है ना which is very unstable, then we prepare it while the reaction is happening. ठीक है, तो आपको ONO चाहिए. ONO के लिए आपने एक रिएक्शन कराया और NaNO2 और HCl में आप RNH2 डालेंगे. So NaNH2 is not ONO, but NaNH2 को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा? ONO. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन C2. मतलब उसी सिचुएशन में बिल्कुल आपको बनाना है. ड्यूरिंग अ रिएक्शन, बेसिकली अगर हम इसको अच्छे से डिफाइन करें, देन इट विल बी अ रिएजेंट दैट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन.
and then used in the same reaction. B लिखेगा aromatic amines. So aromatic amines, aniline we will take, benzene ring, NH2, NaNO2 plus HCl. This will give you benzene diazonium salt. N2 positive, Cl negative. This is benzene diazonium chloride. ठीक है. अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल इसी चैप्टर में, तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे. राइट, नेक्स्ट 6th रिएक्शन. अच्छा, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए भी देखना तो उसको देख लीजिए. मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड्स में नहीं आता जनरली, बट यू कैन सी इफ यू हैव R2, दैट मींस इट इज सेकेंडरी अमीन विद NH2. सॉरी, NH2 नहीं होगा, NH होगा, माय बैड. NH और साथ में आपके पास है ONO. ONO, तो यहां से ऐसे पानी निकल जाता है and you will get R2 with nitrogen, and this nitrogen will have a double bond with nitrogen. This nitrogen will further have a double bond with oxygen plus H2O. इसको बोलते हैं नाइट्रोसोअमीन. नाइट्रोसोअमीन. Next, if you have 3 degree, that is R3N, and you react this with HONO, then it is going to give you R. What happened? R3NH This will be NH positive because it is making 4 bond, and NO2 will be NO2 negative. So it is basically ionic. And if you warm it, it is going to give you R2N double bond NO, nitrosoamine, and alcohol, ROH. Dissociation हो जाता है and you get nitrosoamine and ROH, alcohol. Basically, these 2 reactions are not there in your NCERT. ठीक है, इसके लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है. बस एक बार कुछ चीजें ना कॉपी में रहनी चाहिए, कहीं अगर आ जाए. NCERT, if I remember correctly, it is given something like 2 degree and 3 degree amines, they react differently. That's it. इतना ही लिखा हुआ नहीं. With nitrous acid. Fine. The 6th reaction is quite important. This is a reaction with, please write, a reaction with aryl sulfonyl chloride. अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये बेसिकली वैसा ही रिएक्शन है जैसा कि हम लोगों ने देखा था एसिड क्लोराइड में. ठीक है, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. नाउ द रिएजेंट दैट वी यूज हियर, द अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, it is something like this. You have benzene ring which is connected with sulfur with a double bond oxygen, and then chlorine, and this is known as Hinsberg reagent.
ये हिंसबर्ग टेस्ट भी हो जाता है, हिंसबर्ग रीएजेंट। अब यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा आप देखिए। इन एसिड क्लोराइड व्हाट डिड वी हैव अपार्ट फ्रॉम नॉट एग्जैक्टली वी डिड नॉट हैव कार्बन, सॉरी वी हैड कार्बन देयर, वी हैव सल्फर हियर, ठीक है। बट इफ यू लुक एट द सराउंडिंग atoms, वहां पे भी कार्बन doubly bonded with oxygen, that is why it was delta positive, and it had chlorine which left out, right? और इसको एक हाइड्रोजन चाहिए होता है रिएक्शन के लिए इन द एसिड क्लोराइड केस, इफ यू रिमेंबर 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता, 1 डिग्री और 2 डिग्री करते हैं, एंड दैट इज व्हाई नाउ दिस पर्टिकुलर reagent that we have, Hinsberg reagent, when it makes a compound, it has different properties, ठीक है, and that is why it can be used for, please write, used for distinction of 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को ये डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए जरा, क्लोरीन कितने हाइड्रोजन चाहता है? क्लोरीन को एटलीस्ट कितना हाइड्रोजन चाहिए? टेल मी गाइस, वी नीड एटलीस्ट हाउ मेनी हाइड्रोजन? टेल मी, नहीं पता, भूल गए। अरे क्लोरीन कितने हाइड्रोजन पे अटैक करता है? अगर आपने बनाया है रिएक्शन का मैकेनिज्म तो देख के बताइए जरा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, नो आइडिया, आई विल वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। हाउ मेनी हाइड्रोजन डज क्लोरीन नीड्स? ऊपर से जा रहा है सबके, फाइन। देखिए अब यहाँ पे छोड़िए, हटाइए, आप लोग इसको रटिए फिर। 1 डिग्री अमीन, it will react with the Hinsberg reagent and it is going to give a product which will be soluble in water, soluble in H2O, ठीक है। The 2 degree amine that we make plus the Hinsberg reagent, this will give a product which is not soluble in water। देखिए ये प्रोडक्ट दे रहा है ना, दिस प्रॉपर्टी इज अबाउट प्रोडक्ट, ये ध्यान रखिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1 डिग्री और अमीन और हिंसबर्ग रिएजेंट दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी सॉल्युबल इन वाटर, एंड 2 डिग्री अमीन प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट विल गिव यू अ प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, not soluble in water. Now since 3 degree amine, it does not have any hydrogen, 3 degree amine plus the Hinsberg reagent, it does not have any hydrogen, there will be no reaction, as 3 degree has no hydrogen on nitrogen, नाइट्रोजन में कोई हाइड्रोजन होता नहीं है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा काम ये करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तीनों के बारे में, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ध्यान दीजिएगा गाइस। वी हैव सल्फर डबल बॉन्ड O, सल्फर डबल बॉन्ड O एंड देन क्लोरीन, ठीक है, एंड देन क्लोरीन। अब पहले आपके पास रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? 1 डिग्री अमीन के साथ। 1 डिग्री अमीन में क्या होगा? यू विल हैव नाइट्रोजन, जिसके पास होंगे 2 हाइड्रोजन्स, राइट, एंड देन एन R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये बस समझ लीजिए HCl का बॉन्ड बन जाता है यहां से, और सल्फर नाइट्रोजन में बॉन्ड बनाना है आपको, ठीक है। ओ माय बैड, स्विच बैकग्राउंड, या ठीक। नाउ दिस बेंजीन रिंग को हम पीएच लिख रहे हैं ना, आप लोग बुरा मत मानिएगा, पीएच लिख रहे हैं, पीएच इट इज देन अटैच्ड विद सल्फर डबल बॉन्ड O एज इट इज, द डबल बॉन्ड O इज एज इट इज, फॉलोड बाय नाइट्रोजन। एक हाइड्रोजन तो क्लोरीन ले गया, एक हाइड्रोजन लेकिन अभी भी इसके पास मौजूद है, एंड देन वी हैव R, राइट। नाउ दिस हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑल्सो आई मीन ये हाइड्रोजन ही नहीं, दिस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। As you know, when hydrogen is bonded to nitrogen, oxygen or fluorine, it can form hydrogen bond. Now since we have NH here, this NH can form hydrogen bond with water and be soluble, है ना। तो ऐसे हाइड्रोजन को जो नाइट्रोजन वगैरह से इस तरह से अटैच होता है, तो इसको बोलते हैं दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, therefore soluble in वाटर लिख दिया है हमने, माय बैड गाइस। इसको एक काम कीजिए, तो वाटर चेंज कर दीजिए, वाटर में तो सॉल्युबल होता है, इन एल्कली लिखिए, एल्कली विल बी बेटर, एसिडिक है तो एल्कली लिख दीजिए प्लीज, नॉट सॉल्युबल इन एल्कली।
एसिडिक हाइड्रोजन, हाँ एसिडिक हाइड्रोजन देयरफॉर सॉल्युबल, अच्छा हाँ ठीक है, दिस विल बी सॉल्युबल इन अल्कली, देयरफॉर सॉल्युबल इन अल्कली। वाटर में ये वाला भी सॉल्युबल हो जाएगा बिकॉज नाइट्रोजन फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, अल्कली राइट, अल्कली ओनली अल्कली नॉट वाटर। दिस इज एसिडिक, व्हाई इट इज एसिडिक बिकॉज आपने अगर इस हाइड्रोजन को निकाल दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, हाइड्रोजन को आप निकालेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, एंड दिस नेगेटिव चार्ज कैन बी इन रेजोनेंस विद दिस सल्फोनिल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज एसिडिक। दूसरा आप देख लीजिए जरा, व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव 2 डिग्री। You have one hydrogen, then the nitrogen is bonded with 2 alkyl groups. तो रिएक्शन तो हो जाएगा यहाँ पे, दिस क्लोरीन विल, इट ओनली लीड्स 1 हाइड्रोजन, सो ये पीएच इसी तरह से है, देन सल्फोनिल का S double bond O, S double bond O as it is bonded with N, and this nitrogen has 2 alkyl groups. So this is not soluble in alkali, not soluble in alkali as there is no acidic hydrogen. As there is no acidic hydrogen. Three degree amine में क्या होगा? You will have nitrogen, and there are 3 alkyl groups. Therefore, it is not going to give any reaction. No reaction. No reaction. Raise your hand once you're done. Waiting for Madiha, Rabah, Shahid. Madiha, Rabah, and Shahid. Then you like last, that is electrophilic. Aromatic substitution of aniline. Sir, Yeah, tell me. after this, the chapter will be over. After this topic? Yes. नहीं नहीं, इसका डाइजोनियम सॉल्ट है, Oh, डाइजोनियम yes, सॉल्ट yes. का है ना, डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लीज राइट, NH2 ग्रुप जो होता है ना, इट इज हाईली एक्टिवेटिंग। NH2 ग्रुप is highly activating
ड्यू टू प्लस एन इफेक्ट, ड्यू टू प्लस एन इफेक्ट and gives tri-substituted product on electrophilic aromatic substitution, है ना। और दूसरा NH2 group is ortho para directing, ये भी आपको बताना चाहिए, ortho and para directing due to प्लस m, ठीक है। तो अगर हम ब्रोमिनेशन इसका करते हैं, ठीक है, एक हम ब्रोमिनेशन करते हैं, प्लीज राइट हियर, लेट अस सपोज वी हैव ब्रोमिनेशन। तो इसमें आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनिलीन से, उसका रिएक्शन सिंपली आप कीजिएगा ब्रोमीन वाटर, डोंट नीड एनी कैटलिस्ट, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है दैट ओनली ब्रोमीन वाटर इज इनफ फॉर द रिएक्शन। आपको FeBr3 कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, एंड एक तो ये एक्टिवेटिंग होता ही होता है, does not require anything and it gives tri substituted product if you just use aniline like this। NH2 as it is यहाँ पे होगा, and you will get Br on the ortho, Br on this ortho and Br on the para, ठीक है। So you are getting tri substituted product। Now in order to control this activating nature, I hope you have written this 2 points, 2 पॉइंट इसलिए आप लोगों ने ये सर ना थोड़ा जल्दी बोलेंगे, 1 minute. डन, नो क्या बोल, जोर से बोलिए जरा, सर डन सर। डन ना, 1 2 पॉइंट, minute. ठीक है। वेट, अच्छा इसको लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं हाउ टू कंट्रोल दिस वेरी हाईली एक्टिवेटिंग नेचर। डन, लिख लिया आप लोगों ने, 2 पॉइंट्स लिखना है बस, ब्रोमिनेशन वाला नहीं लिखना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस। सर Yes, iodine and Shavesh? fluorine is cannot be prepared. What? Can iodine and fluorine be prepared with this? आयोडीन एंड फ्लोर, अच्छा आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन, ठीक है। इन Yes, जनरल आयोडीनेशन फ्लोरिनेशन आर जनरली नॉट डन बिकॉज फ्लोरिनेशन इज वेरी वायलेंट इन नेचर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एंड आयोडीनेशन इज जनरली वेरी स्लो। तो व्हेन वी से हैलोजिनेशन, तो जनरल मीनिंग होता है ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन कैन बी डन, ठीक है। Now, the yes. only reason that I am not specifically giving you point कि iodination नहीं कर सकते हम, fluorination नहीं कर सकते हम, because there is no question like this and they have never asked question like this, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा होता तो आई वुड हैव रिटन, जैसे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो हैलो एल्किन हैलोरीन में, आई हैव रिटन दैट फ्लोरिनेशन एंड आयोडिनेशन कैन नॉट बी डन। तो वो पहली बार जब लिखा दिया ना कि F2 और I2 को जनरली ही रिएक्ट नहीं किया जाता है, और तो वो सेम रीजन इज एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस। सो वेर एवर यू सी, कहीं भी आप नहीं देखेगा कि I2 का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, I2 या F2 को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, यू विल नेवर सी दैट, राइट। खैर, अब यहाँ पे अब हम लोग को एक चीज पढ़नी है, दैट इज हाउ टू कंट्रोल दिस एक्टिवेटिंग नेचर, ठीक है। सो यू राइट हियर,
to control highly activating nature and get monosubstituted product aniline is aniline is reacted with acetic anhydride aka it is also known as acetylation of aniline. So we start with aniline. We react this with acetic anhydride, C double bond O here. Second. One oxygen here. Like this. Now we have seen this reaction. अभी थोड़ी देर पहले this nitrogen is going to attack on this carbonyl carbon. ठीक है, तो आपको ये benzene as it is, the nitrogen group attached as it is, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन बच जाएगा. Then you will have this carbon with double bond O and then CH3. Acetylation हो गया यहाँ. Now once the acetylation is done, अब क्या होगा ये जरा देखिए आप. This lone pair is still here. Now this lone pair can go into resonance in two different direction. ये lone pair इधर भी आ सकता है towards this carbonyl atom, and this lone pair can go here also. Now this जो lone pair सिर्फ और सिर्फ benzene की तरफ जा रहा था, we have diverted that lone pair electron towards a different direction. So you can say that the activating nature जो plus M effect था, it has been reduced. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. So like it will go to C double bond. हाँ, दोनों तरफ जाएगा. ठीक है, तो एक तरफ जा रहा था, that is why it was increasing the electron density in benzene ring, very बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा था. उस चीज को रोकने के लिए हमने क्या किया, डाइवर्ट कर दिया. जैसे मान लीजिए ना, अगर आप हाँ टू डायरेक्शन, अगर एक नदी में पानी बहुत ज्यादा बह रहा है, देन व्हाट डू वी डू, उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है ना, ताकि फ्लडिंग ना हो जाए. सेम थिंग. सो वी हैव डाइवर्टेड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द कार्बोनिल कार्बन. अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू ब्रोमिनेशन. Now when you do bromination, you will mainly get para. ठीक है, para प्रोडक्ट आपको मिलेगा. ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलेगा? ऑर्थो प्रोडक्ट इस वजह से नहीं मिलेगा बिकॉज यू कैन सी दैट देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, यू कैन सी देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस ना, यहाँ पे मतलब ब्रोमीन का आना बहुत मुश्किल है. ठीक है, सो यू विल हैव द बेंजीन लाइक दिस, एंड देन हियर यू विल हैव NH, C double bond O, CH3 as it is, and the Br will be in the para position. Now we need to just get once again the aniline, है ना, NH2 वापस से लाना है. तो you will do hydrolysis in the presence of H2O. हाइड्रोलिसिस करेंगे किसके प्रेजेंस में, H plus और OH नेगेटिव के प्रेजेंस में. So what will happen, देखिए ध्यान से, इस हाइड्रोजन के पास आएगा एक, सॉरी इस नाइट्रोजन के पास आएगा हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास चला जाएगा OH. सो N के पास आएगा हाइड्रोजन, कार्बन के पास OH. फाइन, एंड वी विल गेट बैक आवर NH2. और ये Br2 को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दिस Br विल बी एज इट इज, यू विल गेट NH2, है ना, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. दैट डजंट मैटर, बट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल. अब एक चीज देखिए, अलग अलग सवाल आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग सवाल के अलग अलग जवाब होते हैं. इफ दे आस्क यू give reason, acetylation of aniline,
गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, पहला उन्होंने लिखा हुआ एसिटाइलेशन क्यों किया जाता है, एसिटाइलेशन क्यों किया जाता है, इस वजह से decrease किया जाता है the टू कंट्रोल हाईली एक्टिवेटिंग नेचर एंड गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। फाइन, मेक सेंस। ये सवाल आया था। yes, sir. दूसरा सवाल आपके पास हाँ, एक सवाल आया था, इट वाज लाइक दिस, हाँ, the question was after acetylation of aniline we get mono substituted product। तो ये जो पहले सवाल का रीजन था उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया क्यों होता है ऐसा, after acetylation why do we get mono substituted product। So for that what you will do, you will write the next point that I am writing कि acetylation के बाद क्या होता है, दिस इज, तो acetylation क्यों करते हैं, टू कंट्रोल, और acetylation करने के बाद होता क्या है, ठीक है ना, क्यों मोनो प्रोडक्ट मिलता है हमको, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। सो यू विल राइट आफ्टर एसिटाइलेशन, यही था डाइवर्जन ऑफ लोन पेयर ना, वही आंसर है, इसको लिख लीजिएगा जरा। आफ्टर एसिटाइलेशन the lone pair of nitrogen interacts with CO, that is carbonyl CO, due to resonance, and hence making the lone pair electron less available for benzene, less available for benzene, and this decreases the and this decreases the activating power leading to mono substituted product। देखिए आंसर मेक द, ये आप बना दीजिएगा तो आपको सारे के सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा एक और चीज ना, आई मीन चलिए ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे, दैट इन आंसर राइटिंग यू कैन ऑल्सो यूज स्ट्रक्चर्स मोस्टली। ठीक है, अगर आपको ये सारा इतना ज्यादा रीजन नहीं लिखना है बहुत ज्यादा, तो आप ये स्ट्रक्चर ऐसे बना दीजिएगा दैट रेजोनेंस कैसे हो सकता है, दिस नाइट्रोजन कैन गो हियर, दिस लोन पेयर कैन गो हियर, pH here you'll have positive charge, carbon single bond O negative charge, and CH3। ठीक है, so you can show that this lone pair is less available for pH after acetylation, after acetylation। So please write this down, raise your hand once you're done। Waiting for Madiha, Tarif, and Shahid। Madiha is done. Tarif and Shahid just waiting for you guys।
ठीक है, please try to remember the questions also. Like the first point is for the first point to control है ना.